A very good morning to all of you. In the continuation with T3 syllabus, today in the science class, we are going to start the chapter number 6, that is soil erosion and conservation. In this chapter, we'll talk about the formation of soil, soil erosion, causes of soil erosion, and the conservation of soil. So now let's start. Soil. Soil is the foundation of all life on earth because we need food for survive and we get food from plants. Now plants prepare their own food. Okay. But plants prepare their own food in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of water and minerals. Now plants get minerals and water from soil. So soil is needed for growing plants and also it is needed to build our homes and schools. Now let's understand the formation of soil. How does soil forms? So soil is formed from rocks that are broken into little pieces. Now let's understand. This you could see in the picture. As we go below the surface of the earth, at the bottom of there is a bedrock. Above that there is a parent material. Above that there is a subsoil. Above that there is an elevated horizon. And the top soil over there, it is also called as organic matter or humus. Because on the top of the soil, there present the dead plant and animals. They decayed over there and they decompose over there and makes the soil fertile, more fertile, because it is rich in nutrients. The topmost soil is rich in nutrients because of this. Now, how the soil forms? This parent material is the part, means this is the main part. This parent material means, as you know that different geographical areas, region, there are different types of soil present over there. As you know, red soil is present somewhere is black soil is present, which is good for cultivating cotton. Somewhere alluvial soil is there, which is more nutritious. Nitrogen, the percent of nitrogen is more in alluvial soil, and many more other soils are present according to their geographical areas. Now what actually is, जिस तरीके का पत्थर वहाँ पर होता है, मीन्स उसका पेरेंट मटेरियल जैसा होता है, वहाँ उसकी सॉइल वैसे ही वहाँ की सॉइल होती है, क्योंकि पेरेंट मटेरियल से ही वहाँ का सॉइल फॉर्म होता है, उसके जिस तरीके का पत्थर है वहाँ पे. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस सॉइल फॉर्म्स. सो इट द नेचुरल फोर्सेस, वो जैसे कि सन, wind and rain, these natural forces helps in the formation of soil. How? Soil gets heated by the sun, then the rocks get heated by the sun, then cools at the night. Fine. Then this repeated heating and cooling cracks the rocks and breaks them into smaller particles, as you could see in the picture. Now, rain also plays an important role in the formation of soil. How? This breaks the rocks into tiny particles, means ये जो cracks हो जाते हैं उसमें rain जब होती है तो वो fill up हो जाते हैं और उस cracks को और बड़ा करके तोड़ देते हैं पत्थर को, and this breaks down in the tiny particles to form soil. At the end, thus we get soil. Now, soil, we get soil. Now this soil is present on the topmost layer of the soil. And what is soil erosion? Now let's understand what is soil erosion. Soil erosion is the carrying away, or you can say the washed off of the topmost soil, is called soil erosion. Means carrying away of the topsoil by natural forces is called soil erosion. Now what is natural forces? Natural forces is your rain and wind, as you could see in the picture. In the first picture, soil erosion is caused due to rain, because no plant is over there. Understand this point very carefully. दोनों ही चीज़ों में एक मेन पॉइंट है कि प्लांट्स आर नॉट ओवर देयर, प्लांट्स एंड ट्रीज आर नॉट ग्रोन ओवर देयर. व्हाट एक्चुअली हैपन्स, trees and plants holds the soil.
कभी आपने देखा होगा गमले में प्लांट लगा है या कहीं पे भी लगा है, आप उस प्लांट को उखाड़ने की कोशिश करेंगे जड़ से, तो आप देखेंगे कि मिट्टी भी उसके साथ जड़ों में लग के आती है, मतलब अच्छी खासी मिट्टी लग के आती है. व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि जो द रूट्स ऑफ द प्लांट, दे इट होल्ड्स द सॉइल टाइटली. तो वो सॉइल को कहीं जाने नहीं देती, वो होल्ड कर कर रखती है. जब एक इलाके में बहुत ज़्यादा पेड़ लगे होते हैं तो वहाँ की सॉइल वहीं रिमेन रहती है, कहीं मूवमेंट होके नहीं जाती है. बट जहाँ पर प्लांट्स नहीं हैं, if plants are not over there, so what happens when heavy rainfalls occur, so the topmost soil will flow with that water. ठीक है, फ्लो ऑफ हो जाती है, वॉश्ड ऑफ हो जाती है. ठीक है. सिमिलरली अभी लुक एट इन द सेकेंड पिक्चर्स, दिस इज कॉज्ड सॉइल erosion by wind. what happens कि व्हेन नो क्रॉप्स इज़ ग्रोन ऑन अ लैंड, एक लंबे से मैदान हैं खेत के और कोई फसल नहीं उगा रखी है, व्हाट हैपन्स, अगेन द सेम प्रोसेस. जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होगी वो कैसे होगी, उसमें लूजेस पार्टिकल्स होंगे. जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है, विंड ब्लो करेगी, तो जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है वो उड़ के फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस चली जाएगी, और वहाँ की ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो ऑर्गेनिक लेयर है, वो क्या हो जाएगी, वॉश्ड ऑफ. सो इन दिस मैनर soil erosion occurs. Now, this you could see, this is an example of the Chambal Valley of Madhya Pradesh, and this soil erosion is caused over there. This is one such most important example of the soil erosion. Now, the main one important cause of soil erosion is deforestation. What is deforestation? Deforestation is the large scale cutting of trees. फाइन. एक लंबे पैमाने पर जब आप पेड़ों को काटते हैं, जंगल के जंगल काट डालते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. नाउ डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, आपने पेड़ काट दिए, नाउ वहाँ की जो ज़मीन की जो मिट्टी है वो फिर से फ्री हो गई, है ना, क्योंकि पेड़ से क्या था, द रूट्स ऑफ द ट्री होल्ड्स द सॉइल ओवर देयर, वो उसी जगह पर उस सॉइल को रखते हैं एक ही स्थान पर. बट नाउ ट्रीज आर नॉट ओवर देयर, so now the soil particles are free, topmost soil particles are free, and they are easily able to move from the air and water, heavy rain and wind, so thus causes soil erosion. Now the what we need to do is we have to conserve soil. Now how conservation of soil occurs? So topsoil has been protected by means of suitable measures, and this is called soil erosion. So what are the methods? You will conserve soil by growing trees, by constructing dams and embankments, by terrace farming, and by growing grass and creepers, or by growing as many trees as you can. ठीक है, इन एन ओपन ग्राउंड, जहाँ पर भी जगह है आप पेड़ लगा दीजिए बस. ठीक है. Now let's understand. First of all, as you could see in the picture, that is terrace farming. By terrace farming, the flow of rainwater is very rapid on hill slopes. आपको पता है हिल स्लोप्स में बहुत ही तेज़ी से जो पानी है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो उससे क्या होता है, इट वॉश्ड अवे अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल. सो टू प्रिवेंट सच लॉस, द स्लोप्स आर कट इनटू स्टेप्स. तो हम स्लोप्स को है ना छोटे छोटी सीढ़ियों में कट कर देंगे, तो जिनको सीढ़ी नुमा खेत भी कहते हैं. सो फार्मिंग, और फिर उसको छोटे छोटे स्टेप्स में कट कर वहाँ पे हम फार्मिंग करेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज टेरेस फार्मिंग. ओके. So in this manner we can conserve soil. Now next you could see in the picture, we have make the embankments are built where to prevent the floods. आपको पता है नदी के किनारे embankments बनाए जाते हैं ताकि जो है बाढ़ ना आए. बाढ़ कैसे आती है, जब हैवी रेनफॉल होता है और नदी का पानी बढ़ जाता है और जो पास के एरिया है, जो लैंड है, वहाँ पर पानी फैलने लगता है तो बाढ़ आ जाती है. तो क्या एक्चुअली क्या होता है, व्हेन वी मेक द एम्बार्कमेंट्स, सो जो लैंड, वहाँ के नदी के बगल में जो लैंड है वहाँ की मिट्टी का कटाव नहीं होगा. व्हेन हेवी रेनफॉल अकर्स, सो पानी के साथ मिट्टी भी वहाँ से बह के नदी की तरफ, नदी में जाएगी. बट अगर हमने वहाँ पे किनारे, नदी के किनारे एम्बार्कमेंट्स बना दिए हैं ऊंचे ऊंचे, तो वो मिट्टी पानी तक, नदी में नहीं जा पाएगी और वहाँ की मिट्टी वहीं की बची रहेगी, लैंड पे ही रहेगी. सो इन दिस वे वी कैन कंजर्व सॉइल. नाउ नेक्स्ट इज
as I told you, by growing grass and creepers to prevent the soil from getting blown away, ताकि वो उड़ ना जाए हवा के साथ, विंड के साथ, तो फार्मर्स कैन ग्रो क्रॉप सच एज ग्रास एंड क्रीपर्स. अगर वैसे तो फार्मर्स अपने खेतों में फसल उगाते हैं, बट फसल काटने के बाद जब कुछ नहीं होता है तो ग्रास भी उगा दो आप. ग्रास की भी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को बने रहने देंगी. ठीक है. सो द रूट्स ऑफ सच क्रॉप्स होल्ड्स the soil particles together and prevent soil erosion. Or you can grow trees and bushes. Fine. So this is now the last is कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आपको अपने पास की मिट्टी को बचा के रखना है, बिकॉज आजकल कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो नॉर्मल टॉप सॉइल है वो मिल ही नहीं रही है. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ग्रो द प्लांट्स वेर एवर यू find any space, any land over there. Fine. So in this manner you can conserve the soil. So that's it. The chapter is finished. Now go through the chapter, read the chapter thoroughly and understand it, and solve the exercise by yourself till I send you the answers of that. So thank you so much. Have a good day.